StudyIQ में आपका स्वागत है। आज लर्निंग इंग्लिश इन लेस देन 10 मिनट्स में हम देखेंगे कई प्रकार सम वेज सम इम्पॉर्टेंट इंग्लिश फ्रेजेस जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं टू एक्सप्रेस दिस स्टेटमेंट नाइस टू मीट यू। अगर हम किसी से मिलते हैं और हमें मिलना अच्छा लगता है या नहीं भी लगता है तो इट्स अ पोलाइट कर्टसी टू से नाइस टू मीट यू और प्लेजर टू मीट यू। और किस प्रकार से नाइस टू मीट यू को हम और तरीकों से कह सकते हैं यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से देखेंगे। मुझे आपसे मिलके बहुत खुशी मिली। इस पर्टिकुलर सेंटेंस को कई और नाना प्रकार से हम किस प्रकार से इंग्लिश फ्रेजेस का प्रयोग करके बोल सकते हैं। स्टार्टिंग ऑन विथ टू वेरी कॉमन एंड सिंपल फ्रेजेस। नाइस टू मीट यू की जगह ग्लैड टू मीट यू और गुड टू मीट यू। Glad to meet you, I'm happy to meet you and good to meet you. So nice to meet you की जगह हम इन दोनों phrases का प्रयोग कर सकते हैं। It was great interacting with you. It was great interacting with you. It was fantastic interacting with you. हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं या हम simply कह सकते हैं It was great seeing you around. It was great seeing you around or great seeing you around simply. We can also say happy to meet you. Nice to meet you की जगह happy to meet you. Happy to meet you is another phrase that can be used. आप simply reply कर सकते हैं How do you do? How do you do? That's another way to reply when you want to say nice to meet you. How wonderful to meet you. How wonderful to meet you. कितना अच्छा लग रहा है आपसे मिलके. This is wonderful. How wonderful to meet you. I had a great meeting. I had a great meeting. I had a great time interacting with you. I had a great meeting. I had a great time interacting with you. I had a great time interacting with you. I've enjoyed meeting you. I've enjoyed meeting you. आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया आपसे मिलके, so इसीलिए आप ये कह सकते हैं I've genuinely enjoyed meeting you. Do keep in touch. It was fun chatting with you. It was really fun chatting with you. It was fun talking to you. So it was fun chatting with you or it was fun talking to you. हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं nice to meet you. We can also use a plethora of these sentences like it was lovely meeting you. It was lovely meeting you. It was nice meeting you. It was nice meeting you. It was nice talking to you. It was really nice talking to you. It was nice to have met you. It was genuinely nice to have met you on this occasion. I'm so glad. It was genuinely nice to have met you on this particular occasion. It's a pleasure to meet you. It's my pleasure. It's a pleasure to meet you today. You can also say another phrase that is, it was very nice to meet you. It was very nice to meet you. Lovely to meet you. आप simply कह सकते हैं उसे short and crisp रखने के लिए lovely to meet you. Nice meeting you. Nice meeting you. Pleased to meet you. I'm so pleased to have met you or I'm pleased to meet you. इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने शॉर्ट ब्रीफ क्रिस्प तरीके देखे सो दैट वी कैन रिप्लेस नाइस टू मीट यू। हम नाइस टू मीट यू को रिप्लेस कर सकते हैं विद दीज फ्रेजेस दैट वीव लुक्ड एट। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू मीट समवन आप इनमें से कौन से इजी फ्रेज को पिक करेंगे टू टेल समवन दैट वाज अ प्लेजर टू मीट देम और वाज नाइस मीटिंग देम। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं एंड इन केस ऑफ एनी डाउट इन दिस वीडियो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।